Good morning, students. Today we are going to discuss about one more topic, functions. So here also, first of all, I would like to discuss all types of definitions, formulas, right? And everything and, related to this topic. And afterwards, once again, 30 questions, PYQs, I would like to discuss them. Okay, let us start functions here, right? See, this topic is functions. Right, functions topic. Now, here I would like to discuss the definition. Three types of definitions are there. A mapping f a to b is said to be a function. A and b are what? Non-empty set. Now, please remember that. Okay, is said to be a function if every element of set A is mapped with unique element of set B. Okay, that is one definition. Another definition, graphical definition is also there. Right, line drawn parallel to y-axis should cut the graph at most at one point. This is the third definition. And the fourth definition is, second definition is mathematical definition. What it is means, F A cross B I have to discuss Cartesian product of two sets. Okay, F should be subset of A cross B, I have to say first point. And the next one is A comma B belongs to F. For all A belongs to A, B belongs to B, I have to say second point. Third point is A comma B and B comma A. Okay, A comma B and something A comma C, two are there, implies A, B is equal to C at the same. Okay, these are the three definitions which I'm going to write here. You see this on the screen. Yeah, whatever I said it to you that I wrote here, you see this mapping of A to B, an empty set I said, I see set to be a function if every element of set A is mapped with unique element of set B. See, these are the example. You see, every element of set A is mapped with unique element. Unique element means one element. Two elements of A can map one. The sense is the same. The English language. Element of every element of set A, you see, mapping with one element, unique element. Yeah, these all three are what? Functions. But whereas here, uniqueness is not there. One element of A is mapping with two elements. So that's why it is not a function. And come to the next one. Here, there is no mapping for every element. I said that every element of set A. Maybe in set B, several elements are left over, but not in A. If A, anything is left over in A, then directly you can say that it is also not a function. This second. Okay, move on to the second definition. As I said it to you that F, A cross B. What is that A cross B? So A cross B means, you see this I have taken here. So A cross B means I can write like this now. 1, 4, okay, 1, 5, 1, 6, okay, 1, 7, like this, and 2, 4, 2, 5, 2, 6, and 2, 7. And like that, 3, 4, 3, 5, 3, 6, and 3, 7. Set of all order pairs. This is what A cross B, Cartesian product of two sets we can say. So now question here is what F is subset of A cross B is purely correct. And A comma B, I said that for all A. See the same sense, definition is same, nothing is changed in this one. Mathematical also, I wrote same thing. And here, if two elements are there, A is mapping with two elements, those are not same, different, they are same. That means this sense is there here. Okay, so here I have taken one example, F A to B, I is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 I have taken. 6 examples are there. A is 1, 2, 3, B is 4, 5, 6, 7. Now I wrote here several examples. Now you see here, this is, yes, it's a function. This not a function. Why? Because no mapping for 3. What do I have to say? No mapping for 3. Here, this is, yes, it is a function. 1, 2, 3 is involved. 4 is repeated 2 times. Yeah, this is also a function. And this is not a function. Why? Because here uniqueness is not there. 1 map to 7 and 1 map to 4. 7 is not equal to 7 is not equal to 4, but he said that B is equal to C. It is not there. And this is also what? Not a function. Why? Because 6 comma 3 does not belongs to A cross B. That's why it is not a function. And third definition also, I said it to you that line drawn. Yeah, here I'm going to draw the diagrams, Nana. You just
Here are the definition. Whatever I said that I wrote here same as it is. Any line drawn parallel to y-axis in the given interval. Later onwards, we are going to say that this given interval is called its domain if it is a function. Should cut the graph at most at one point. Yeah, this is a function. And this is also a function because it is going to cut at one point. Here it is 2 points now. You see that it is cutting 2 points, not a function. Not a function. Simply I can say that this is not a function. Whereas here it is also going to cut, mod function I have taken here. It is also going to cut at one point. That's why it is rod, right? So it's a function and this is not a function. This is also a function, right? And here it is also y cube, x cube, y is equal to x cube is also a function. All these three are functions except this one. This is. Now we'll move on to the next one. What is that domain? See guys, suppose if I write here clearly, if I said that a to b is a function, Suppose if I said that a to b is a function, then here a is called its domain and b is called its codomain. Please remember that a is called its domain and b is called its codomain. Suppose if I write here one example, right? How I am going to denote here a codomain? Domain means DF. Codomain means CF. Right? This is A and this is B. So one example, 1, 2, 3 I have taken, 4, 5, 6, and 7. Same example I'm taking. Right. So domain is what? A. Codomain is this one. Total. Domain, we can see like this one. Okay. I'm going to write here clearly. See this. Yeah, clearly I wrote like this, Nana. If f a to b is a function, a is called codomain, denoted by like this. B is called, a is called domain, B is called codomain, and denoted by like this. This is DF and this is C. Okay. Now, after this one, I have to discuss here image and pre-image. Wordings. Okay. If you learn clearly, then only you can understand none of this topic. That's why I'm giving this much of important. Okay. Image and pre-image. Okay. Here I'm writing diagram by taking one example. I would like to tell you clearly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, it is like this. And it is this. 7 is there. So simply, it is a function, no doubt. It's a function. Right? It's a function. So you can say that a to b is a function. It is. So what do you have to say? If a to b is a function, I'll write that one. Right? It's a function. Now here, simply I can say like this now. Image of 1 is 4. Image of 2 is 5. Image of 3 is 6. Like this. And now I want to write here one more. What is that? In with the help of what red pen I write? Pre-image. You see this now? Pre-image. Pre-image of 4 is what? 1. Okay. 5 is what? 2. 6 is 3. Like this we are going to write. Okay. Now I'll go for the next one. Anna. Whatever I said, f a to be a function for all a belongs to a. This symbol is there exists now. There exists an element. If you say that function for every a, there exists one element b belongs to b such that f of a is equal to b. Here b is called image of a and a is called the image of b. That is the example why with the help of example I explained already. Now I'll move on to the next one. Range. I'll go for the range. Okay, shall I turn the page? Yeah. F a to b is a function, Nana. A to b is a function. Right. A to b, I'm drawing a function here. Yeah, you see this. Right. A to b is a function. And a set of all elements of b. All elements of b which are having at least one pre-image in set A. That means very clearly what I'm saying here. You see DF. Domain is very clear. 1, 2, 3. Nobody is going to tell anything about that. Codomain is also very clear. 4, 5, 6, 7. And what I said that range. Rf. You can write like this also. How many elements are there which are having pre-images? 4 and 5. This is range. Okay. Finding range. Range we'll discuss at the end. 5 types are there.
how to find range, etc. All those things. Okay, this is one. And the next one is here, one has to remember this one, Nana. What is that? Number of functions. Okay, from A to B. How many functions are there from A to B? Is what, like this one? N of B to the power of N of E. This is the one. One most important point here I would like to discuss, and that is this one. Suppose I would like to give an example here, because the same example I'm taking 1, 2, 3, I'll take A, and B is equal to what? 4, 5, 6, 7, I'll take. So here, number of functions. Okay, from A to B now. How much? N of A. You see this? N of A to the power of N of B. That is nothing but N of A means 3, N of B means 4. 3 to the power of 4 is 81 functions are possible. Okay. Sorry, I think I wrote little wrong here, Mr. Triggers. Sorry, guys. N of B, 4 to the power of 3 I have to write. That is N of B to the power of N of A. 4 cube now, that is what? 64. Okay, it may happen. Hota rehta hai actual, right? So number of functions I discussed. Let me go for the next point. Here clearly I discuss about function and ingredients of function. Now what is that? Classification of function is there. Actually we are going to classify function in two ways. Right? One is what? Algebraic function. The other one is transcendental. I'll pronounce it like this, Nana. Transcendental functions. So in algebraic function, again, I'm going to divide into two parts. Okay. In the first part, polynomial. With polynomial, we'll have what? Two again. That is identity as well as constant function. And the next one is rational, irrational. This is one part. Second part is what? Piecewise defined functions. Mod x, fractional part, integer, signum, and least integer function. These are all things with their properties I would like to discuss. And then in the case of a transcendental, I would like to say logarithmic function, exponential function, or trigonometric functions, hyperbolic functions, inverse hyperbolic function, inverse trigonometric function. This all comes under transcendental functions only. Now in detail, I would like to write over here. Just you see this, Nana. Yeah, whatever I said that, you see, algebraic functions, I divided into part 1, part 2. In part 1, polynomial, identity and constant. Here, again, I will discuss rational, irrational. The next one is mod function. SGN means signum function. And GIF means greatest integer function. FPF means fractional part function. And LIF means least integer function. And in transcendental, as I said it to you that logarithmic, exponential, this is what exponential, trigonometric, inverse trigonometric functions, hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions. This is what classification of function. So detailedly, I would like to tell you like this, Nana. Polynomial. What is polynomial? What is the most important point? What is identity function? If it is possible, graph also I will talk. What is constant function? What is rational function? What is irrational function? Right. One by one, I would like to write in detail these all things, Nana. What is mod function? Their properties. Signum function. If there is any properties, yeah, you are supposed to learn. And step function. Step function, GIF, both are same. The properties of step function is very, very important. This is called as what? Piecewise defined function. PWDF means piecewise defined function. So one has to learn this all thoroughly. देख भाई, जो कोई भी ये सीख लेगा ना यार, ये सीखेगा और इसके पूरे प्रॉपर्टी सीखेगा, तो वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में फेस नहीं करेगा. मैक्सिमम ही कैन कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स. पूरा कैलकुलस इस पे जमे में रहता है यार, इसलिए इसका पूरा डिटेल में अभी लिख देता हूँ, लिख के आपको बता देता हूँ. राइट, लॉगरिथम इसके हो सका तो इसके ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ या नहीं बल्कि ग्राफ आप लोग देख लीजिए. ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन पॉलिनोमियल. राइट, पॉलिनोमियल, polynomial function. You see this? F to R is defined by like this: a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1, so on, a n minus 1 x plus an. Remember, this is not equal to 0. I'm writing here because it is nth degree polynomial. I can say that if I write here a naught is not equal to 0 and a1, a2, a3 all are what? Real numbers. So this is what polynomial I said.
Here you see, Nana, if I write here like this, suppose polynomial I'm writing here. Here ax cube plus bx square plus cx plus d 1. Right. Another one I'm writing here ax square bx plus c. Another one I'm writing here ax plus b. Another one I'm writing a. Another one 0 I'm writing. So these are all different polynomials I wrote. Okay. Different polynomials here. Examples I wrote here. What is the degree of this one? You remember degree when a is not equal to 0, then only I can talk about this. What is the degree of this one means? The highest power is 3. Degree of this one is what? 2. Degree of this one is what? 1. Degree of this one is what? 0. And whereas degree is what? Undefined. Undefined. You can say that undefined. Because if f of x is equal to 0 is there, definitely you can say that undefined. And the most important point related to this is note. Yaad rakhna yaar. Polynomial. Note. Always. Okay, polynomial is always, you can say that, is always. Polynomial is always differentiable as well as continuous. अरे यार इसमें अब डेफिनेशन क्या बताऊं, देखिए यार अगर 3 रूट है ऐसा हो जाएगा, दो 3 रियल रूट्स है ऐसा होगा, ये तो इसका डायग्राम ऐसा रहेगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ये एक्सिस का रहा तो, राइट। ये और लीनियर फंक्शन का तो आपको पता है, कोई भी ऐसा ले लो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ तो भी। एंड इट इज वाई इज इक्वल टू ए है, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर तो होगा या नहीं तो नीचे तो होगा ऐसा। ये पॉजिटिव रहा तो ऊपर, ये नेगेटिव रहा तो नीचे। जीरो मीन्स परफेक्टली एक्स एक्सिस रहता है, इसलिए कुछ बोलने नहीं आता, राइट। डिफरेंशिएबल एज वेल एज इट इज कंटिन्यूअस, यू प्लीज रिमेंबर नाउ। पॉलिनोमियल के बाद अपन पॉलिनोमियल में क्या थे, दो चीजें डिस्कस करते हैं, वो था अपने को आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। एक भाई आइडेंटिटी फंक्शन बहुत सिंपल है, एफ ए टू ए is said to be identity function. Every element of A is mapped with same element, right? तो यार ऐसा लिख सकते हैं, उसको डिनोट कैसा करते हैं यार, आई आई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसा आ जाता है। ठीक है, मैं डायग्राम में ड्रॉ करके बता रहा हूँ अभी, तो देख लो यार। Yeah, whatever I said, I wrote here. See this, A is non-empty set, f a to b is defined as what? F of x is equal to x for all x belongs to A, it's called identity function. वही बोला था मैंने यार, ऐसा y is equal to x ड्रॉ करो बोला था। ये यार एक पॉइंट ज्यादा लिखा, देख भाई ये आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या रहता है यार, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रहता है। एग्जाम्पल 1,2 1 2 3 एक सेट दे दिया, तो या फिर क्या हो सकता है 1 2 1 1 2 2 3 3 हो सकता है। अब कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बोल देते हो यार, if mapping f a to b is said to be a constant function, right? If every element of set A is mapped with only one element of B, only one element of B से होना है, so range of constant function is what set singleton, ये अलग है। और इसका जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, if A is positive, if f of x is equal to k, we are going to take k is positive, the line you have to draw above the x-axis. If k is negative, the line you are supposed to draw below the x-axis. ऐसा ड्रॉ करना है यार, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देख लीजिए अब। This function is said to be a what? Constant function if all element of set A are mapped with only one element of set of B. यार set of B से ये जो डिस्टेंस पे k है, हर एक एलिमेंट यहाँ जाके मैप कर रहा है, तो इसको ऐड कर, इसको पूरा कनेक्ट कर दो, एक लाइन आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा। k पॉजिटिव रहा तो, k नेगेटिव रहा तो नीचे रहेगा। डिफाइंड ऐसा भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बोल के ऐसा बता सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, रेशनल फंक्शन। पता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल ले लो, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, the function which is in the form of what f of x by g of x is called what, simply we can say that rational function, ऐसा बोलते हैं, where g of x is not equal to 0। मैं भी वही अभी लिख के बता देता हूँ यार, जरा देख लो आराम से। Whatever I said that I wrote here clearly. See, a function f of a function of the form f of x by g of x, I said g of x not equal to 0, and f of x, g of x are what, polynomial function. Examples I have given here। अगर से जब भी डोमेन लिखना है यार इसका, तो आप लोग लिख सकते हो, देखो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, r minus 2 here। What about this one, this is r minus 0 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डोमेन r इज इक्वल टू 0 1 3, ये नीचे वाला जो भी है ना वो 0 नहीं होना, बस ऐसे। कभी कभार इसका डायग्राम अगर से ड्रॉ करना है, डायग्राम अच्छी तरह से सीख लो यार, बस कैसे जाएगा, ऐसा कैसे जाएगा, राइट।
ऐसा समझ लो यार, बस क्या ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होगा। टच नहीं करेगा, थोड़ा गैप है, समझ लो ऐसा। रेशनल के बाद अभी क्या है अपने को, वन बाय, अब अभी नेक्स्ट डिस्कस करने का क्या है अपने को, रेशनल फंक्शन के बाद इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन ऐसा डिपेंड करते हो यार, इरेशनल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हैविंग नॉन इंटीग्रल रेशनल पार्ट्स, मतलब 1 2 3 नहीं रहना, पावर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं रहना, powers of x are irrational number. Okay, irrational. See here, uh, are called what, irrational function I said, not integral parts. Rational, rational means 2/3, 1/2, 1/3 ऐसा कुछ हो सकता है राइट। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपको देखो यार, एग्जाम्पल लेने से पक्की तरह से समझ में आ जाएगा आपको। देखो भाई, एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स है प्लस 3 है, ऐसा लिखो, यस इट्स इरेशनल। अब इसका डोमेन फाइंड आउट करो बोले तो क्या करोगे यार, रूट एक्स देखोगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या, 0 to ∞, ये होगा आपका डोमेन, ये होगा आपका डोमेन यार। अगर से मैं ऐसा दिया फॉर एग्जांपल, कुछ तो ऐसा एक टू पावर ऑफ एक्स टू पावर ऑफ 1/3 भी दिया तो चलेगा। ओके, क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया समझो, एक्स टू पावर ऑफ 1/3 हो जाएगा, ये भी क्या है, हाँ इसका तो पूरा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो मैं इसका दो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यार, जरा देख लो एक बार आप लोग। आप देखिए, दो डायग्राम देख लो यार, तो ऐसा है, ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस है, इसका डायग्राम देखो, ये एक्स क्यूब का डायग्राम क्या होगा, ऐसा आपके पास जाएगा भाई, ये ऐसा आके ऐसे जा रहा, उससे क्या होता है, एक्स टू पावर 1/3, जो बीच में से सीधा जा रहा है इज इक्वल टू एक्स है, ऐसे डायग्राम होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट जोन में अपन एंटर करने वाले हैं, व्हाट इज दैट, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज क्लियरली एक वन बाय वन आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल फंक्शंस, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट गाइस। मॉड फंक्शन और मॉड्यूलस एब्सोल्यूट फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं, मॉड्यूलस करके भी, कैसे डिपेंड करते हैं यार, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, सो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एक्स लिख देना यार, इज डिफाइंड एज, okay, is defined as like this, mod x एक बाई माइनस एक्स होगा कब, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा राइट। यहाँ पे इसका डायग्राम कैसा रहेगा अभी बता देते हैं यार, एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं। जिस, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसा डायग्राम हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज एक मिनट, I'll turn the page, see the properties now. What are the properties means? Here, the first thing which I'm going to write here. So I hope that you people got clear idea. Suppose if I write x minus 1 modulus, so then you have to write here x minus 1. देख भाई, x के प्लेस में ऐसे ही लिखना, x is greater than equal to, x is less than equal to, sorry, x is less than equal to 1 हो जाएगा। वही x minus 1 is less than equal to 1 लिखे तो ऐसा आता है, और x minus 1 होता है x is greater than or equal to 1 हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी, वन है ना बोल के वन, टू है ना बोल के टू बोल के नहीं लिखना, बस ऐसे ही लिखना है। एक्चुअली ऐसा बोले तो बता देता हूँ, आप लोग ऐसा भी लिखो चलेगा, ऐसा भी लिखो चलेगा, ये या नहीं तो ये कोई भी एक, ऐसा। तो उसका प्रॉपर्टीज देख पाए, मॉड एक्स इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता, दो डेफिनेशन है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स एक होगा, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा कब, ये एक्स पॉजिटिव हो तो होता है यार, ये एक्स नेगेटिव हो तो हो जाएगा, ऐसा लिख लेंगे। और एक क्या बात है यहाँ पे, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, दो भी सेम हो जाएंगे। और ये इतना ही नहीं, और देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखूं, तो उसको मॉड एक्स लिखना पड़ेगा आपने, राइट। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिखूं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देख भाई, एक्स क्यूब अगर से लिखा मैं, तो सिर्फ मॉड एक्स क्यूब लिखेगा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना है तो नहीं, तुम्हें ऐसा लिखना है तो आप बोलना पड़ेगा एक्स इज नॉट 0 to ∞ लिखना पड़ेगा, नॉट पर नेगेटिव, ऐसा आएगा राइट। अब देख भाई यहाँ पे देख, मॉड एक्स वाई है, क्या लिखेगा,
मॉड एक्स मॉड वाई हो जाएगा, राइट। मॉड एक्स वाई बोला था, ऐसा लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है यार, मॉड एक्स वाई है, तो क्या होगा, मॉड एक्स बाई वाई है, सॉरी मॉड एक्स बाई वाई लिख दे रहा हूँ यार। देखो यहाँ पे एक्स बाई वाई है, मॉड एक्स बाई वाई ऑल प्रॉपर्टीज का बुक टू राइट, मॉड एक्स बाई मॉड वाई लिख सकते, प्रोवाइडेड वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इतना ही नहीं भाई, अब यहाँ पे देखो यार, मॉड एक्स प्लस वाई लिखा, दिस इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। अगर से मैं बोला मॉड एक्स माइनस वाई है, तो ये क्या होगा यार, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होगा। अब ये दोनों को मिला के लिखना है, लिख ले भाई, लिख, ऐसा लिख सकता था, मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ऐसा लिख सकता। और एक है, क्या है यार, अगर से मैं बोला इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू ए बोला, देन क्या होता है, होता क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा तीन केसेस आते हैं। तब ए अगर से पॉजिटिव है तो क्या होता, ए नेगेटिव है तो क्या होता, ए जीरो है तो क्या होता, आप सोचना है, यू आर सपोज टू थिंक ऑफ दिस। इफ ए इज पॉजिटिव, यू आर हैविंग गॉट टू आंसर्स, ए एंड प्लस साइन। ए नेगेटिव है, डोंट हैव एनी आंसर। ए जीरो है, उसका जीरो ही होगा यार, इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड एक्स इज कैनॉट बी नेगेटिव, ऐसा नहीं रहता, इसलिए ऐसा। और देख भाई नेक्स्ट, इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए बोल के बोला, तो तब क्या होगा, देख भाई ऐसा होगा, एक्स बिलोंग्स टू, यार सोचने वाली बात है, देख ले। अब एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी होगा। अगर से ए नेगेटिव है, तो आर लिख ले, बराबर हो जाएगा, पूरा रियल नंबर से डेफिनेटली बड़ा रहेगा। अगर से ए जीरो हो गया, तब आंसर क्या होगा तेरा, जीरो के अलावा, जीरो ग्रेटर देन जीरो मीन्स नो, नो सेंस इज दिस, सो यू हैव टू राइट हियर आर माइनस जीरो, ऐसा है। और एक पॉइंट है यार, इफ मॉड एक्स इज लेस देन ए है, तब क्या होगा, देन देख भाई ऐसा होगा, देन एक्स बिलोंग्स टू, ये देख, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जीरो है। ए पॉजिटिव है तो क्या होता, ओपन इंटरवल माइनस ए टू ये हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो क्या होता, एम्प्टी सेट, ऐसा होता ही नहीं, जीरो, ये भी नहीं। ओके, ये पूरे प्रॉपर्टीज कितने नंबर है जरा देख लेंगे, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी बता देते हैं यार, देख लो। मॉड एक्स थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बता देते, तो देख लो। मॉड एक्स का डायग्राम अपन ऐसा लिखे थे, याद है ना। हाँ, तो मॉड एक्स माइनस वन अगर से बोला, तो ये डायग्राम क्या होता है यार, थोड़ा सा वन यूनिट राइट साइड को हट जाएगा। मॉड एक्स प्लस वन बोला समझ, तब क्या होता है यार, ये डायग्राम थोड़ा सा वन यूनिट लेफ्ट साइड को, वो राइट साइड को हटेगा, आएगा अंदर से सब्ट्रैक्ट एंड, अंदर से सब्ट्रैक्ट करता ऐसा होगा, अंदर से ऐड करता ऐसा होगा। अब तेरे को डाउट आ जाएगा, सर बाहर से ऐड करते तो क्या होगा, कुछ नहीं यार, ये एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा, सेम शेप रहता। ओके, जीरो कमा वन, वन यूनिट उठ जाएगा, वही माइनस वन बोल दिया समझ, सेम रहता है यार शेप, वन यूनिट नीचे आ जाएगा, राइट। ये हो गया। अभी देखिए यार, अगर से तू मल्टीप्लाई करा कुछ तो क्या होगा, कुछ नहीं होता भाई, उसमें सिर्फ होता क्या है, वो स्क्वीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, स्क्वीज हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये स्क्रीन पे थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ऐसा। ओके, वही मॉड एक्स बाई टू ऐसा हो, वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड एक्स के बारे में, राइट। विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन है ना, ए विल मूव ऑन टू सिग्नम फंक्शन है ना नेक्स्ट। Okay, signum function, it is defined as SGN of x, okay, denoted like this, defined as mod x by x here, x not equal to 0. And here it is x is equal to 0, right? It is x equal to 0. And why I wrote minus 1? Very simple here. If you take x is less than 0, क्या होगा, mod minus x by x होगा, x greater than 0 ले ले, x by x हो जाएगा, और एक जीरो तो वो तो डिफेंड करा, इसलिए यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई रोट हियर क्लियरली लाइक दिस ना। Right. What is the diagram of this one? Diagram of this one is very simple, guys. Yeah, I would like to draw it here like this. Right. थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे. Right. It will be like this now. This is open. This is close.
and this is open. This is 1, this is -1, 0, ऐसा होगा. Now what is the range? See here, range of this function is -1, 0, 1 ये हो जाएगा. इसका इसका रेंज क्या होगा यार, ऐसा होगा. अब फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर से मैं ऐसे दिया समझ, ऐसा यार, यस जी एन ऑफ एक्स बोल के लिखा, लिख के मैं बोला कि सोचो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ, एक्स के बजाय मैं कुछ और लेता हूँ यार, फिर से डिफाइन कर लेते हैं. देखो, एच जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया समझो, ये क्या होगा, कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है. इसको भी कैसे लिखना पड़ेगा आप लोग को, देख भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड में लगा दे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या करना, नॉट इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, ठीक. और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 बोलना, 0, इतना ही ना. अब ये अलग बात है कि तू यहाँ पे माइनस लिया प्लस लिया बोलने का अलग बात है. अब तू लिखता क्या है यहाँ पे, देख, -1 लिखना पड़ेगा, कब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 हो तो. ओके, ऑफकोर्स ना दिया है तो समझ लेने की बात है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पॉजिटिव रहा तो 1 होगा. अब उन्हें दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, 0 हुआ तो ये भी क्या होगा, 0. ऐसे डिफाइन करते वक्त ऐसा कर लेना है, राइट. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अरे 2-3 पॉइंट भूल गया, 2-3 पॉइंट भूल गया था. एक्सजेन ऑफ के एक्स बोला तो एक्सजेन ऑफ एक्स ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा के नेचुरल नंबर आ गए. यहाँ पे देख भाई, एक्स इंटू एसजीएन ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड एक्स होगा. एक्स इंटू एसजीएन ऑफ एक्स, एक्सजीएन ऑफ एक्स दो दो बार को अगर से लिखा तो मॉड एक्स ही से यहाँ पे सिंपली एक्स ही हो जाएगा. अब इसके बाद देख यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना है. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे क्या है, तो डिटेल में मैं लिखता हूँ, 4 डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्कस करना है केसेस. ओके, natural number, negative natural number, right? And next one is what, रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर. इसको कैसा होता है, क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे. या आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर. The function f r to r is defined as f of x is equal to like this, the greatest integer, where this is what integral part of x or greatest integer less than or equal to x. ऐसा बोल सकते हैं. नहीं तो ऐसा लिख दे यार, if x is on any real number then there exists what integer n and n plus 1 and n minus 1 भी लिख दे यार. ओके, सच दैट ऐसा भी हो सकता है या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, व्हाट इज दैट. ओके, अगर से तू नेचुरल नंबर्स लेगा या होल नंबर्स लगा दे यार, ये 0 भी लगा दे, 0 होगा, 1 2 3 ऐसे ही पॉजिटिव आएगा. अगर से तू पूरे नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर रहा, यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव्स, राइट. -3 सपोज, here -3, it will be like this. अब नेक्स्ट केस 3 देख भाई, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है. ये 1.2 है समझ, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 आता. अब 1.99 भी है, तो इसका वैल्यू कितना होता, 1 ही होता. क्यों, तो कैसे याद रखना है यार, 1.2 को ऐसा ले ले, 1 प्लस 0.2 लिख, फाइंड द पॉजिटिव डेसिमल पार्ट. याद रख, रखना रखना है यार, पॉजिटिव डेसिमल पार्ट को निकाल देना है इसमें से, राइट. तो ये बात, ये फंडा है, कैसा याद रखा, बस है. तो यार यहाँ पे देखो, 2.3 इफ आई राइट, दिस इज व्हाट 2, 0.5 इफ आई राइट, इट इज व्हाट 0. थोड़े एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं. केस 4 है, चल भाई यहाँ पे देख, -1.2 लिया, ये क्या होगा. तो यार यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, -1.2 को ऐसा लिखते हैं ना, -1 -0.2. आई सेड दैट अवॉइड द पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट. तो याद याद कर यार, यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर ले, 1, वैल्यू विल नॉट चेंज. तो यहाँ पे क्या होता, -2 प्लस 0.8 होता. अब अवॉइड, सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, -2. -1.99 अगर से ऐसा है, ये भी क्या होगा, सेम -2 होगा. वैसे -2.3 है, ये क्या होगा, -3 होगा. -0.5 है, ये क्या होगा, क्या -1 होगा. ओके, 4 केसेस, इसके प्रॉपर्टीज है, मैं अभी लिखूंगा, देख लो यार. इसी डोमेन ऑफ integer function is what, r, and range is integer. And these are rules, Nana. One has to know this, especially these two. Right, you see that 0 and -1, here 2 and -1 will get. And it's a fraction part here. If it lies between -1 and 1, we are getting like this.
n plus integer plus some fractional part is there, and at that time we are going to get in this way. Here step of x plus y is always greater than or equal to step of x plus step of y. Okay, suppose if I take here x is 2, y is 2.3, then definitely it will be like this, greater than. Integers, if I take both are what same, you will get. So in the case of this one, right, step x is greater than 1, step x is less than, greater than equal to, less than equal to, I discuss. Step you write several times, nothing will happen, only one you have to consider. But if you remember, in out of these two, this formula is very, very important. Now I want to tell you here roughly, you see this now. Suppose if I said that step x is greater than 3, ये कैसा लिखेगा? मतलब क्या होगा यार? Step x is equal to greater than 3 बोले तो 4, 5 ऐसा होगा ना? इसको कैसा लिखना पड़ेगा? x belongs to, देख भाई, ओके, 3 बोल के नहीं लिख सकता, कहाँ से लिखना पड़ेगा तुझे? ये कैसा आएगा? 4 to infinity पूरा, whatever it may be, you will get like this. अगर से मैं ऐसा लिखा step is less than 3, देख भाई, तो क्या होगा यहाँ पे यार? step is less than 3 मतलब क्या होगा? less than 3 है, तो उसका मतलब क्या होगा? माइनस, सॉरी, 2. ओके, अब यार माइनस इन्फिनिटी टू, देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, देखिए, माइनस इन्फिनिटी से चलेगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? x belongs to minus infinity to, what I'm supposed to write? 3 open, 3 open, देखो यार यहाँ पे 3 open, यहाँ पे क्या करा? ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 3 और 3.1 3.2 लिखे तो फिर 3 होता, इसलिए क्या करना? 4 से स्टार्ट करना, ऐसा होगा. अब इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 3 है, तो उसका मतलब तो बहुत क्लियर, क्या हो गया? 3 to 4 ओपन इंटरवल, 3 क्लोज, राइट, ऐसे बात है होंगे. अब नेक्स्ट क्या है यार? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वी हैव टू डिस्कस. या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, you see here x belongs to R, then the function x minus step x, right, called what? Fractional part of x, denoted by like this, two flower brackets, and this always lies between 0 and 1. 0 close interval, 0 side, and for one side it is open interval. Here I discussed, I wrote clearly these are the 3 points related to this number. If integers you take down 0. If here second one is I discussed 3 points here. You know very well, fractional parts you take down, only you will get this one. But here you will get, for clarity point of view, I have taken this example. If you take this one, only fractional part we have to consider, not integral part. And the next fourth one is, if you take like this, you see clearly I explained here. 1.1 means you have to change this. I said it to you that avoid the positive decimal point. So that here we have positive decimal point we have to get. How? Add and one, subtract, add one and subtract one always. Why? Because I have taken here 1. People will think that what only. That's the reason I have taken 1 minus 1. No, sir. That's why here I have taken one example. Minus 3.6. What is that? Even though if it is minus 3, minus 0.6 is there, I added 1 and subtracted 1 only. So the answer is 0.4 here. Here it is 0.9 here. This is very clear. And I have taken one example here. What is that? X plus 4. When you will get? You will get what? This. Okay, for this all values I wrote here, clearly I wrote one by one, right? And next, these are the points you have to remember now. These are properties. X plus or minus, if you write down here, what happened here? X only you will get. But step x is equal to here. Fractional part of x is 0 when, as I said it to you that, x is integer. But when you add here x plus fractional part of x and fractional part of minus x, if you add, you will get 2 answers, right? For integer 0, for non-integer 1 you will get. If it is minus, for integer 0, no doubt. For non-integer 2, fractional part of x minus 1 you will get. This is what about fractional part. Okay, a least integer function is there that I would like to discuss now. Just let me turn the page. Yeah, least integer function. You see this 4.5. Quite opposite रहता है यार, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करा, राइट? इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मेंस में. मेंस के लिए तो बस ये नहीं देखे तो भी अच्छा है, फिर भी मैं बता दिया क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए बोल के. 4.5 y 5 हो जाएगा, वो स्टेप फंक्शन का उल्टा रह जाता है. यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 हो रहा है, उल्टा है. देखो 3.2 है, 4 हो जाएगा. -5 इंटीजर को इंटीजर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करा, जब इंटीजर है स्टेप एक्स लिख ले, एक्स लिख ले, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए लिखा.
नॉन इंटीजर है, स्टेप एक्स प्लस वन हो जाएगा, कुछ भी लगा लिया प्लस वन लगाना पड़ेगा। दो इंटीजर्स के आठ का 0 एंड 1 ही आएगा, इंटीजर रहा तो एक, ये नॉन इंटीजर रहा तो एक। अभी मैं एक काम करूंगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का एक टेबल दे देता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, जहाँ जहाँ पे जो आप पॉसिबिलिटीज है वहाँ टेबल देके मैं खत्म करता हूँ। ड्रॉ डायग्राम्स आप लोग देख लो यार थोड़ा बहुत, राइट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। Yeah, transcendental function, that is what logarithmic function first I'm discussing here. A function f 0 to infinity, of course, this is open interval to r, is defined as what, Lorna? Log x base a. Of course, people are going to write this, yes. A and n are positive, a not equal to 1, a to the power of x is a real number such that a to the power of x is equal to n. Then people are going to write like this also. Log x, log n base a, we then write. What is that? These two are positive numbers and a not equal to 0. Like this we can write. So simply I define like this, nothing will happen. So based on a, if a is greater than 1, then it is what? Increasing function. And if a lies between 0 and 1, it is what? Decreasing function. And what are the rules here? You see this, Nana. Log x base a, if I write, yeah, immediately you can write like this, log a base x, or else log x by log a you can write. Okay, now you see here log xy. What is that? Log x plus log y. I'm not writing the base, Nana. Right, and the next one log x by y. How much? What is that? Log x minus log y here. Okay, log base a same is there, answer is 1. Okay, log 1 base a is there, answer is 0. And you see this log x to the power of n is there, you can write n log x now. Right, and another one is there, log x to the power of n base y to the power of m is there, n by m log x base y you can write. Another one, let me tell you, log x base a and log a base y can be written as log x base y you can write. Another one, Nana. You see this? Log a base y multiplied by log x base a also the same story. Log x base y you can write. And here a to the power of log x base b is there. So you can write like this. You can interchange these two. Log x log a base b you can write. Suppose if I write like this, log x base a is there, a to the power of, then using that rule, log a base a, you can write here x to the power of 1. Okay, these are few formulas of logarithms now. Right, we'll move on to the next one. Inequality relatedly, I have to tell one point here. You can write this as, see this now. X is less than y, simply you can take, provided x is greater than, a is greater than 1. And x is greater than y you have to take if a lies between 0 and 1. And suppose if I write like this, greater than is there, log y base a is there, same story, x is greater than y provided a is greater than 1, and x is less than y if a lies between 0 and 1. These are the points. These are 12 formulas you have to remember. Now move on to the next one, exponential function. Yeah. Exponential, nothing is there, f of x is greater to power of x. A is greater than 1 means it is increasing. A lies between 0 and 1, it will be what? Decreasing here. Simple, nothing is there in this one. Now, trigonometric functions, domain, range, I'll write as a table. Just you see this. Now I would like to write. Here is trigonometric functions. This is function, domain, and the range. Okay. Function, sine function, whose range is what? -1 to 1. Cos function, whose range is what? -1 to 1. Domain is like this. And tan function, whose range is what? Like this. And cot function is what? N pi. Of course, n belongs to integer. This is also r. And this is what? R minus 2n plus 1 pi by 2. N is integer. You need not worry. Here, minus infinity to -1, union close 1 to infinity. And here r, what is that? N pi, you can write, and range is minus infinity to -1, union 1 to infinity. This is
Of course, if you write here as inverse, sin inverse x, okay, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, secant inverse x, and cosecant inverse x. Because these are what not bijective functions, right? We have to restrict the domain. After restricting the domain, then we can write everything here, right? This is what function and the domain here for inverse and range, right? Domain and range. Domain is -1 to 1. Here also was -1 to 1. This is R. This is also R. -infinity to -1. Union. Close now, no? 1 to infinity. Same as it is. -1 to 1. Close here. Union 1 to infinity. Whereas here, this is close interval. -pi/2 to pi/2. This is close interval 0 to pi. This is what -pi/2 to pi/2. And this is 0 to pi. And whereas here 0 to pi, but -pi/2 we have to remove from this. This is -pi/2 to pi/2. We have to remove 0. Right. You should know this. And hyperbolic इतना ज़्यादा नहीं है यार. इतना ज़्यादा नहीं है hyperbolic का. Hyperbolic, inverse hyperbolic. If possible, I'll write. Otherwise, I'll go for the next. Yeah, I'll go for hyperbolic. आप लोग देख लो यार. इसमें नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वो ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहा. So some more definition. What is that 1, 1? A function f a to b is said to be a 1, 1 function if every element of a is mapped with distinct element of. मैंने इस फंक्शन में डेफिनेशन में क्या करा था? यूनिक एलिमेंट बोला था. यहाँ पे वर्ड क्या यूज करूँ? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी बोला. अलग अलग एलिमेंट से मैप करेगा. वही मैं लिखने चाह रहा हूँ यार. देख लो यार, अभी डेफिनेशन में देख लो, समझ में आ जाएगा. यस, यू सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा दिया है. ओके, ये क्या है? डेफिनेशन 1 है. तो अभी डेफिनेशन 2 बता देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ. इससे पहले आपको बता दें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो व्हाट 1, 1 फंक्शन बोल के बोल सकते हैं. वो बाद में लिख लेता हूँ. अब नेक्स्ट वन देखो यार. एफ ए टू बी इज अ फंक्शन. ओके, इज सेड टू बी अ 1, 1 फंक्शन इफ f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to what? A. राइट, f1 x2 belongs to what? A. ऐसा होना चाहिए, तभी अपन इसको फंक्शन. इसमें एग्जांपल्स देके भी मैं डिटेली एक्सप्लेनेशन में देता हूँ. लेट मी राइट हियर क्लियरली. फंक्शन f a to b is said to be what? 1, 1 function if, वही बोला था यार, f of x1 is equal to f of x2, x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to A. अरे यार, ये करते वक्त ना, सम्स करते वक्त ना, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको. कैसा है? मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो. f of x is equal to x स्क्वायर लिया है, x बिलोंग्स टू r. और एक फंक्शन लिया, f of x is equal to x स्क्वायर लिया. क्वेश्चन पूरा बाद में लिख दे तो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी कर लिया. क्या ये 1, 1 है? is f of x is equal to, एक्चुअली कैसे लिखना? is f of x is equal to x स्क्वायर is 1, 1 और is 1, 1 बल्कि दोनों में क्वेश्चन दिया. तो आप क्या करोगे? आई होप दैट यू पीपल आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. f of x1 is equal to f of x2, so x1 is equal to x2, you are going to write डायरेक्टली लिख देते. सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियरली. क्या है? नहीं बोले तो ऐसे लिखते, बहुत बोले तो चलो लिख दे के क्या करते हैं? स्क्वायर कट कर दोगे, या नहीं तो x1 इज इक्वल टू x2. नहीं करना है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं स्क्वायर्स निकाल देंगे x1 इज इक्वल टू x2 देयरफॉर इट इज 1, 1. नहीं, ऐसा नहीं बोलना है. क्या करना है? देख भाई, ऐसा करना है. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है, x1 माइनस x2 है, और ये क्या है? देख, x1 प्लस x2 है. राइट, x1 प्लस x2 है. यू रिमेंबर वन थिंग यार, यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से याद रखना है. क्या? ये 0 नहीं होना, सेकेंड फैक्टर 0 नहीं होना. दिस शुड नॉट बी 0. अब यार तू ये x बिलोंग्स टू r बोले तो -1 + 1 ले ले, क्या होगा? 0 होगा. -2 + 2 ले ले, 0 होगा. मतलब क्या है? x -1, इसका मतलब क्या होगा? देख भाई, अगर से -1 1 लेगा, ये दो भी जाके क्या होता? 1 से मैप होता. दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1, 1.
ये याद रखना है, राइट. इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन. वाई इट इज नॉट वन वन? बिकॉज दिस इज द रीजन. ये वन वन नहीं होता. चलिए यार इसको देखेंगे. यहाँ पे देख क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. लिख रहा तू. अब तू ऐसा लिख लिया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे लिख लिया, ये सब तेरे को आ गया. यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, आई सेड इट यू दैट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. हाँ भाई, एक्स क्या है, दो भी ओके पॉजिटिव नंबर्स है, दो भी पॉजिटिव नंबर्स है. सेम में बदलेगा यार, दूसरे डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेगा ना. तो सम ऑफ दिस टू पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी जीरो. मतलब क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. दैट्स व्हाई इट इज वन वन एंड इट इज नॉट वन वन. चलिए यार अब पूरा क्वेश्चन लिख दे दूं. Yeah, one more is there. Line drawn parallel to x-axis in the given domain should cut the given graph at most at one point, and you can say that it is one one. या तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, एक बार कट करेगा. यहाँ पे भी देखिए एक बार कट करेगा, यहाँ पे भी ड्रॉ कर ले यार, एक बार कट करेगा. लेकिन यहाँ पे जब ड्रॉ करेगा दो आएगा, यानी कि माइनस वन वन, दो मैच करेगा वन को. सिंपल सी बात है. यहाँ पे भी ऐसी होगा. साइन एक्स का है ये, दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन ड्रॉ. यू विल गेट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स. So these are what not. So with the help of three definitions I have given for one one function. चलो यार अभी नेक्स्ट बात करेंगे अपन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करेंगे. See, it is the most important point here. Number of one one functions. Okay, f a to b if we has defined like this, right? If a to b is given out like this. So you remember n of b, p, n of a permutations है. You know, अगर से सोचो यार एन ऑफ बी, अगर से मैं बोल दिया समथिंग एन है, यम है, चलो. एन ऑफ ए अगर से मैं बोला पी है, नहीं पी नहीं, समथिंग आर है, तो क्या लिखेंगे, यम पी आर लिखना पड़ेगा. मतलब फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एम माइनस आर लिखना पड़ेगा. ये जब भी पॉसिबल है यार, एन ऑफ बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ आर होना चाहिए. लेस देन है तो नहीं होता. Okay, with this one function is clear now. Now let us go for onto function. You can call it as surjection. A function f a to b is said to be what, onto function if every element of set b should have at least right, at least one pre-image, take by one, right, one pre-image in set a. ऐसा देख भाई, ये क्या होगा, कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है. चलो ये वन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. ये नहीं हो रहा क्यों, सेवन यहाँ खाली पड़ा हुआ है. ऐसा भी है. इसको और एक भी बोल सकते हैं डेफिनेशन. ओके, इफ द रेंज एंड कोडोमाइन बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से दैट व्हाट ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं. ओके, वो एग्जांपल और थोड़ा एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ, देख ले. यू सी हियर ऑन टू फंक्शन, तो ये तो दो एग्जांपल दे दिया था यार. एक्स क्यूब ले लिया. देखो भाई यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे डेफिनेशन दिया था ना, है. व्हाट इज द डेफिनेशन व्हिच आई हैव गिवन टू यू? इट्स अ वेरी सिंपल. कोडोमाइन इज इक्वल टू रेंज. व्हाट आई डिड हियर, here one example I have taken, x cube, domain and range is what, r. Whether we'll get r or not, we'll check it out. Yeah, I change everything. Y I have taken here, y here, and I change everything. That means everything of x in terms of what, y. अब ये डिफाइन कब होता भाई, it is defined for all reals. So that means what, codomain is equal to range. Therefore it is onto. Whereas here similar example I have taken, but this time I have taken x square. तो यार इसको चेंज करा, अब मेरा क्या हो गया, रूट फाइव आया. सो रूट फाइव मीन्स इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 0 to infinity, but whereas here it is here given r. So that means codomain is not equal to range. That's why we are saying that it is not onto. देख लेना है. और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के दो केसेस है. इफ एन ऑफ बी इज कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स है, तब क्या होगा, टू टू द पावर ऑफ एन ऑफ ए माइनस टू फॉर्मूला. एक एग्जांपल ले लिया यार, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट्स है. सो दैट यू गॉट इट, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मीन 6. अब वो डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, 6 आ जाएंगे. और उसके बाद देखो यार, अगर से बी में 2 से बढ़ के है, इफ बी कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, सिग्मा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n of b minus 1 to the power of n of b minus r, n of b c r and r to the power of c. ये कॉम्बिनेशन है, वहां पे परमिटेशन था 1 1 में.
यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है यार, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर है। यार एक एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पे 3 एलिमेंट्स है बी में, तो ये देख यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दिया और इसको एक्सपैंड करा। देखो भाई, ये करा। यार N3C2 को मैं फॉर्मूला कैसे लिखती हूँ, देखो यार, 3 इंटू 2 1 इंटू 2 ऐसा लिख। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ यहाँ पे, और अगर से मैं 10C3 बोला सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख दे भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे। बस इतना है, रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया। अब 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब है, 2 क्यूब है 8 हो जाएगा, 24 होता। ये 3 क्यूब है 27 आ जाएगा, ये तो 1 हो रहा। सो आंसर क्या है, 6 से 7। अब इसके बाद और एक फंक्शन है अपने को, क्या है वो, इनटू फंक्शन। Yeah, into function means which is not onto function. Simply, I can say that. See here, I have taken here range is what, and I got it 0 to infinity. But whereas here code domain, it is not equal to this. It is not onto function. That's why it is into function. Whereas here, onto, it is not onto, but it is into. Why? Code domain is equal to range here. That's why it is. So into function is this one. This is not an into function. Now bijection, very simple. A function which is both 1 as well as onto, then you can say that bijective. See, this is a best example. Here we have what is this bijective, because it is 1 as well as onto. Whereas here it is onto but not 1. Whereas here it is 1 but not onto. So with this 3 example, it is very clear that bijective means 1 and as well as onto, then only it is bijective. One example I have taken here, graphically I explained here. I try to very simple example, y is equal to x I have taken. It is 1 and R2, because if I define here R to R, yeah, it is absolutely right. It is absolutely right. 1 as well as R2 it is. Right, one example graphically I have taken. But number of functions is simple. As you know very well that both are what, finite. So n of a is equal to n of b, n of b factorial is equal to n of a factorial. Anything you can write. Suppose a, b are elements I have taken here, 2 sets here. Number of bijection functions is how many? 6. Why? 3 factorial. Right. Guys, here I would like to stop the video. Okay. And the next, I have to discuss so many things are there. Composite function there, I would like to give 5 to 10 examples based on composite functions, because PYQ questions are there. So many are there. Right. And so many of not only composite function, function is a beginning. There are even, odd, inverse, right, periodic, so many are there. So one by one we'll discuss, and after completing this all definitions, and we'll move on to the 30 questions PYQs I would like to discuss now. Okay, here I want to stop this video. In the second part, let me finish the second in second part now. Okay, right. Hope so that is very clear. Bye guys.